लिखते कैसे हैं? We will be writing expected theta cap is equal to theta, या फिर मैंने अभी जो आपको लिख के दिया है mu is equal to mu x bar, तो इसका मतलब है mean of sampling distribution. So examples are: number one, sample mean is an unbiased estimate of population mean mu, because the mean of the sampling distribution of means is equal to their population mean. So mu x bar is equal to mu, or x expected value of x bar is equal to mu. तो इसका मतलब है कि जो mean है, sample mean है, that is an unbiased estimate of population constant. Whereas sample variance, अगर sample का variance है उसका हम population variance calculate करते हैं, that is not an unbiased estimator, that is a biased estimate of population variance. So sample variance is a biased estimate of population variance because mean of sampling distribution of variance is not equal to population variance. तो यहाँ पे ये रूल लगता है कि अगर वेरिएंस का आप मीन निकालोगे सैंपल वेरिएंस का, that will not equal to the population variance. So it is an biased estimate. पर अगर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दें and we will be using this, then it is unbiased estimate. तो अगर मैंने आपको कहा था कि हम जनरली एक्सट्रीम वैल्यू का इम्पैक्ट नलिफाई कर देते हैं बाय यूजिंग n-1, तो वही हमने यहाँ पे किया. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड करेक्शन फैक्टर n/n-1. उससे क्या हुआ? The sample variance is turned into unbiased estimate of population variance. बट समझाने के लिए आपको ये है कि मीन के केस में तो ये एग्जिस्ट करता है, बट वेरिएंस के केस में ये नहीं एग्जिस्ट करता, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के केस में भी ये एग्जिस्ट करता है. सो सैंपल प्रोपोर्शन P इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. तो इसका मतलब है कि अगर आप mean of sampling distribution of proportion calculate करोगे, that will be equal to population proportion. तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Right. Now the second is consistent estimator. Consistent estimator का बड़ा सिंपल सा रूल बताऊं. कोई भी डेटा जो है that is from population. So population से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन से अगर हम कोई कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल से कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं. और अगर इसका गैप पॉपुलेशन और सैंपल का कम करते जाएं, सैंपल अप्रोचेस टू पॉपुलेशन, then statistics will convert it into parameter. जैसे जैसे तुम n इंक्रीज करते जाओगे, इनफाइनाइट करते जाओगे, n will be increased, automatically your expected value, estimated value will be turning into the parameter value. तो उनका जो गैप होगा एस्टिमेटेड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का, that will be narrow down, वो कम होता जाएगा, and that will be called as a consistent estimator. या फिर मैं आपको सिंपल सी बात कहूं कि उनका वेरिएंस क्या होना चाहिए, कम होता जाना चाहिए. जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे उसका सैंपल वेरिएंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, and automatically you will be getting a closer value to the parameter. So estimator is said to be consistent if the estimator approaches the population parameter as the sample size increases. In other words, an estimator theta cap is said to be a consistent estimator of population parameter theta if the probability that theta cap approaches theta is 1 as n becomes larger and larger. Symbolically, theta cap approaches theta and its probability approaches 1 almost 100% when n approaches to infinity. A consistent estimator needs not to be unbiased.
तो ये जरूरी नहीं है कि अनबाइज्ड के केस में आपका ये कंसिस्टेंट हो, बाइज्ड के केस में भी ये कंसिस्टेंट हो सकता है. A sufficient condition for consistency of an estimator is that, अब ये टोटल क्या होगा कि अगर हमें पूरी कंडीशन कंसिस्टेंसी की स्टडी करनी है तो that should be unbiased as well as its variance will be close to zero. जितना उसका close to zero होता जाएगा when n approaches to infinity, then that will be called as consistency. तो ये इन दोनों को मिला के this is basically unbiased and this is about consistency. तो दोनों को मिला के हमारी sufficient condition बनेगी for consistency of an estimator. अकेला ये कह देना कि consistent है but biased है, that is wrong. We need unbiased as well as consistent estimator. ठीक है, तो sample mean के केस में वो unbiased भी है with the property and it is also having the condition of consistency. तो variance उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा when n approaches to infinity. So this is again applicable in case of sample mean, but it is not applicable in case of any other constant, but it is also applicable in case of sample median is also consistent estimator of population mean, because expected value of median approaches to mu and its variance is also approaches to zero when n approaches to infinity. तो कहीं हद तक जब भी आप इसको यूज करोगे तो मोड के केस में ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, मीडियन के केस में ये कंसिस्टेंट होगा, मीन के केस में भी ये कंसिस्टेंट होगा. थर्ड कंडीशन इज efficient estimator. Efficiency is basically a relative term. It is not an absolute term. इसको in comparison to other ही हम compare कर सकते हैं. अगर दो बैट्समैन हैं, उनकी हमें efficiency study करनी है तो हम उनका coefficient of variation study करेंगे. जिसका coefficient of variation कम होगा, जिसका variance कम होगा, that will be more consistent, that will be more efficient. उसी तरह से efficiency of an estimator is defined by comparing it with another estimator. Let us take two unbiased estimators, theta cap 1 and theta cap 2. The estimator theta 1 cap is called as an efficient estimator of theta if the variance of theta 1 cap is less than the variance of theta 2 cap. So symbolically, the variance of first is less than variance of second, and that's why we called this is as efficient estimator. So we will be a concept of consistency, and then we will be having a concept of efficiency, and the efficiency is basically based on variability of the data, and this term is a relative term, not an absolute term. So relative in comparison to other data, in comparison to other samples. If your variance of a particular sample is less, then that will be called as efficiency of estimator. So you can see again over here that sample mean and is an unbiased and efficient estimator of population mean. Similarly, we are taking sample median as a comparative node, and on the basis of this comparison, when we took a variance of mean as well as variance of median, on comparison we have obtained that the variance mean is 64% efficient than sample median. So यहाँ पे तुम्हें clear हो गया होगा कि variability जो हम study कर रहे हैं that is in comparison to other variability, other variance. तो अगर जिसका भी variance कम होगा that will be considered as efficient estimator. These are the three main conditions, and the last condition is sufficient estimator. The last property that a good estimator should possess is sufficiency. As an estimator theta cap is said to be sufficient estimator of a parameter theta if it contains all the information in the sample regarding the parameter.
In other words, sufficient estimator utilizes all informations that the given sample can furnish about population. So sample mean is said to be sufficient estimator of population mean. तो जिसमें भी जिस भी एस्टिमेटर में सारी की सारे इंफॉर्मेशन सारे के सारे फीचर्स होंगे पैरामीटर के, that will be considered as sufficient estimator. So the estimator should have unbiased, it must have consistency, it must have efficient, and then all the information which is required and which is necessary for sample constant in relation to the population parameter, then that will be called as a sufficient estimator. और ये बड़ा important concept है किसी भी sample को study करने के लिए. जब तक ये चारों conditions fulfill नहीं होती, हमें जो sample information है या sample constant है उसके ऊपर हम rely नहीं कर सकते. So these are the four conditions, these are the 4 points of a good estimator, and if you have any doubt you can ask. Yes, anyone having any doubt?